everybody, welcome to my channel. It's me Poonam, and this is the look that I created today. If you want to see the full tutorial, keep on watching. सबसे पहले हम फेस को मॉइस्चराइज करेंगे, तो उसके लिए मैं जॉनसन्स बेबी का मॉइस्चराइजिंग क्रीम यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र के बाद हम प्राइमर यूज़ करेंगे, तो मेरे पास ये कलर बार का प्राइमर है। आई एम यूजिंग दिस। नाउ फॉर द बेस मैं मेकअप स्टूडियो का क्रीम फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। सो आई एम डन विद माई फाउंडेशन। तो अभी मैं फिर से मेकअप स्टूडियो का बेज शेड यूज़ करूँगी मेरे फेस को हाईलाइट करने के लिए, और कैरेबिन शेड यूज़ करूँगी मेरे फेस को कॉन्टूर करने के लिए। तो अब कॉन्टूर और हाईलाइट को सेट करने के लिए मैं मैक्स टच का कॉन्टूर और हाईलाइट पैलेट यूज़ करने वाली हूँ अपनी। ये जो डार्क शेड है ये हम कॉन्टूर के लिए यूज़ करेंगे। Now using this lighter shade to highlight my face. तो अभी मैं ब्लश के लिए ये तो शेड यूज़ करने वाली हूँ। अब ब्लश के बाद हम हाइलाइटर लगाएंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, इट्स फ्रॉम स्टार्स। तो मैं अभी स्टार्स का हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ। हम टेकिंग दिस फ्लफी ब्रश, इसमें थोड़ा सा लेके और चीक बोन पे अप्लाई करेंगे। अब हमारा बेस हो चुका है। अब हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी, तो उसके लिए मैं ये एंगुलर ब्रश यूज़ करती हूँ, और जो नॉर्मल अपना ब्लैक आई शेडो होता है उससे ही मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है आपको ब्रश में, बस थोड़ा ही।
सेम स्टेप हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों आईब्रोज में, ये फिल करने के बाद कैसा लग रहा है और ये बिना फिल कर। आईब्रोज को और शार्प दिखाने के लिए मैं मेकअप स्टूडियो का पेज कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इससे मेरे आईब्रोज तो शार्प दिखेगी ही और जो कंसीलर है वो आई बेस की तरह काम भी आएगा। अब मैं फॉरएवर 52 का आई शेडो पैलेट यूज़ करती हूँ और आज हम क्रीज आई शेडो करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ग्रीन शेड है ये मैं अपने इनर क्रीज में अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं ये वाला शेड यूज़ करने वाली हूँ, उससे थोड़ा डार्कर ग्रीन है। अब मैं ये लाइट ब्लू शेड यूज़ करने वाली हूँ। Then I'm using this dark blue shade. अब हम इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो मैं सिग्मा का F40 ब्रश यूज़ करती हूँ। हमने ये बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं क्रीज को कट करूँगी, तो उसके लिए मैं फ्लैट आई शेडो ब्रश ले रही हूँ। को अच्छे से कट करने के बाद मैं ये वाइट आई शेडो यूज़ कर रही हूँ कंसीलर को सेट करने के लिए। I'm using this Fashion Fever eye glitter, सेम एप्लीकेशन ब्रश में यूज़ करूँगी। लाइनर हमने लगा ली है। उसके बाद हम लोग ने जितने भी शेड्स लीड पे यूज़ करे थे वो सब हम लोअर लैश लाइन में भी यूज़ करें। मैक का मैं जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ अपनी। अब हमें सिर्फ लैशेस लगानी है। सो आई हैव दिस लैशेस। अब मैं उसके ऊपर ग्लू लगाऊंगी।
ग्लू लगाने के बाद हमें 10 सेकेंड्स तक वेट करना है। जब तक ये ग्लू हाफ ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम लैश अप्लाई नहीं करेंगे। मैं मिस क्लेयर का ट्रांसपेरेंट मस्कारा यहाँ पे यूज़ करती हूँ। अब हम ये सेम स्टेप सेकेंड आई पे भी रिपीट करेंगे। सो वी आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड। अब सिर्फ लिपस्टिक लगानी बाकी है। सो आई एम यूजिंग दिस इनसाइड लिक्विड मैट। Here is the final look. So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, I'll see you in the next video. Bye bye.